So what is trigger? Why we do need it? We'll discuss these things now. And trigger, first of all, you have to know this is a stored procedure in database which automatically invokes whenever a special event in the database occurs. So the trigger will be invoked, and that thing is known as trigger is fired. Okay, means we don't call it as invoke. We use the word fired. So trigger will be automatically fired as soon as one specific condition or one specific event will be occurred or will be occurring, and with respect to that, whatever the conditions are there, if that is fulfilled, then that trigger will be fired. So what I mean to say that trigger is directly related, this trigger is directly related to a particular event. So trigger किससे जुड़ा हुआ है? एक particular specific event. जब भी वो specific event होगा, if that specific event is happening, then the trigger will be automatically involved. So we don't need to again execute it from our side. That this will be automatically executed. So the question is that you always remember that what type of stored procedure trigger is. Trigger is a kind of event-driven procedure, okay, because it is related to some event. And suppose example I am citing here, a trigger can be invoked when a row is inserted into a specific table or when certain table columns are being updated. तो जब भी आपने एक ट्रिगर सेट करके रखा था, तो एक रो आपने इंसर्ट किया है कोई एक टेबल में, तो वो जो इंसर्शन हुआ उससे वो ट्रिगर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगी, राइट? So that is an example of trigger. Similarly, suppose if you are updating the column, then also a trigger may be happen to invoke. So the syntax for a trigger is create trigger, then give a trigger name, then before, after, insert, update, delete on table name. So before or after, you know that before this thing or after this thing, and what that thing, either the insertion operator, either the update operator, either a delete operator. All this operation you already perform and you already did the practicals related to them. So for this create trigger, you just need to go through them once again. Create trigger, I'm repeating again, create trigger, say trigger name is T1, before or after, then insert, update or delete, then on which table, that particular table name, for each row, trigger body. This is the particular syntax for a trigger. Now let's have an idea about this means keywords one by one. Then first thing is create trigger, trigger name, creates or replaces an existing trigger with the trigger name. Then before or after means this specifies when the trigger will be executed. Then what are the operations? When this specifies insert or update or delete DML operations. Then on which table, this table name specifies the table associated with respect to that trigger. Then for each row, they specified a row level trigger. Okay, that is the trigger will be executed for each row being affected. This row में आपने insert किया है with respect to that row. Then trigger body. Then this provides an operation to be performed as trigger. So यहाँ ये जो trigger body है, इसमें आप कोई specific operation perform करना चाहते हो, वो mention करोगे. मतलब ऐसा होगा तो वो ट्रिगर जब इन्वोक होगा तो आप क्या ऑपरेशन करना चाहते हो, तो दैट थिंग विल बी मेंशन इन दिस ट्रिगर बॉडी. So these are the explanation of the syntax. Now come to the before and after part. So before or and after of the trigger. Before trigger, run the trigger action before triggering the statement is run. It's very clear from this. And after triggers run, the trigger action after triggering statement is run. For example, suppose you have student report database in which student marks assessment is recorded. Now, in such schema, you need to create a trigger so that the total and average of specified marks is automatically inserted whenever a record is inserted. क्या बोल रहा हूँ मैं एक ऐसा सीमा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट रखा हूँ, राइट? और उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? असेसमेंट रिकॉर्ड. देन क्या ट्रिगर बना रहा हूं? We need to create a trigger so that the total and average of specific marks will be automatically calculated or inserted जब भी आप कोई एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे. तो नया रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग खुद ही सोचो, जब भी एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो टोटल और एवरेज चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो ये एक एग्जांपल है
ट्रिगर का। नाउ हियर दिस ट्रिगर, अब फिर से आपको देखो बिफोर एंड आफ्टर, इसमें क्या होगा, इज द टाइगर, सॉरी क्या टाइगर बोल रहा हूँ मैं, ट्रिगर विल बी इन्वोकिंग बिफोर द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, क्योंकि ये ट्रिगर जो है आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बिफोर ट्रिगर बोलेंगे, बट इसमें ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, ठीक है। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप आफ्टर और बिफोर बनाओगे। तो मैं फिर से आपको एक जनरल चीज बता रहा हूँ, ये जो ट्रिगर है हम खुद के मतलब शेड्यूल के अनुसार हम बनाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता ही है कि जब मतलब जब भी डीबीएमएस की बात आती है, डीबीएमएस एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो हम यूजुअली इन दैट केसेस वी ट्राई टू कीप सम ट्रिगर्स। तो इससे क्या हो जाते हैं, क्योंकि सारे चीज ऑटोमेट हो जाता है, तो आपको कुछ और चीज करना नहीं। यहाँ पे देखो, जब भी कोई भी डेटा इंसर्ट करेंगे आपको फिर से एवरेज कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस ट्रिगर के जरिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। काम आसान हो गई कि नहीं, right? The task is made now easy. So that is the reason why we actually used to keep triggers. Now, for this, what will be the syntax? अब इसमें जो syntax है मैं फिर से दिखा रहा हूँ. Just a minute, let me clear this. Okay. Krishna, you can see my screen now. Yes, sir. Okay. Create trigger student marks before insert on student for each row. Set new total is equal to new subject 1 plus new subject 2 plus new subject 3. comma new dot par percentage is equal to new dot total cross 60 divided by 100. तो इसमें देखो बहुत सिंपल से ही हमने बनाया है. The code is very simple if you carefully observe this. Create trigger student marks before insert on student. क्या टेबल का नाम क्या था, student. For each row. Student. Okay, for every row. जो रो में अफेक्ट होगा वो रो में ये हम क्या कर रहे हैं, इस रो बेसिस ट्रिगर हम फायर कर रहे हैं. तो सेट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ ऑपरेशन, मैंने बोला था ना, यहाँ हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ वो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जहां पे कुछ मतलब कंडीशन रखा था हमने ये ट्रिगर में, वो सेटिस्फाई हो गया तो ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा. तो क्या हो रहा है, न्यू डॉट टोटल, नया टोटल निकाल दिया, कुछ नहीं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, नया जो वैल्यूज है न्यू वैल्यूज हमने यहाँ पे लिया है. न्यू ऑब्वियसली डायनेमिक, यू नो अबाउट दिस ऑपरेटर. देन न्यू डॉट परसेंटेज विल बी न्यू डॉट टोटल क्रॉस 60 डिवाइडेड बाय. This is an example. Now above SQL statement will create a trigger in the student database in which whenever student subject marks are entered before inserting this data into the database. जब मतलब database में insert करने से पहले trigger will compute these two values and insert the entered values. That is MySQL insert into student values 0, let's say A B C D E, ठीक है. tables का आपका attributes का नाम दिया है B20 20 20, जो भी वैल्यू आप देना चाहते हो, क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड. तो ये करके देखोगे आप, this practical you will do it and you will let me know about this. Then types of trigger, अभी आपने देखा रो लेवल ट्रिगर, अभी जो मैंने किया था वो इस रो बेसिस हो रहा था, राइट. so this is falling under रो लेवल ट्रिगर. और बिफोर और आफ्टर के केस में देखोगे तो वो बिफोर वाला होगा, राइट. तो ये आफ्टर भी बना सकते हो, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन योर डिसीजन, राइट. कृष्णा, गॉट इट? Yes, sir. So row level trigger is executed when each row of the table is inserted, updated or deleted. मतलब क्या बात कर रहे हो हम, DML operations की बात हम कर रहे हैं, ठीक है. तो if it is a row level trigger, then we have to explicitly specify while creating the trigger as we did in the above example. Also, we have to specify when that condition in the trigger. Then statement level trigger, this trigger will be executed only once for DML statement. This DML statement may insert, delete, update one row or multiple. अभी यहाँ एक row basis हो रहा है. अब जब statement level की बात आ रहा है, so it may consider one or multiple row or the whole table at single time. Irrespective of the number of rows, this trigger will be fired for the statement. And if you have not specified the type of the trigger while creating, by default, it would be a statement level trigger. ये लाइन ध्यान से देखना, अगर हमने कोई स्पेसिफिक टाइप इंक्लूड नहीं किया है ट्रिगर क्रिएट करते वक्त,
तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट किस टाइप का ट्रिगर होगा आपका, Statement स्टेटमेंट level लेवल trigger. ट्रिगर, ठीक है। क्योंकि देखो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में ये जो रो लेवल ट्रिगर है ये इंक्लूड है, क्योंकि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर में आपका एक या एक से अधिक रोज को हमने इंक्लूड किया है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट लेवल एंड रो लेवल ट्रिगर। Now this is what everything that I have to discuss for today's class. That's why I have kept this class for today, because the next thing, but what I was discussing in the last class, that in fact it will be good to discuss in the morning or half period. So Krishna, I hope that you have got whatever the topics that I have discussed today. Yes, sir. So the question for this lecture is that first you will define trigger, what is trigger and why do we need it, and then you will discuss that this statement level trigger, okay, we need to suppose cite an example for that. That what will be that example, you will think about it, or what will be the means from your point of view, in which case you will means keep this statement level trigger. That is the question for today. Kindly inform every student of your means batch, so that they would be able to answer this before 6:30, and I will consider attendance from that, from their answers. Okay. So that's Okay, sir. all I had to discuss for today. Thank you. Thank you very much for attending the lesson. Bye-bye. Thank you, sir.